A very warm welcome to the USAID Bulletin. I am Meena Tariq. In today's very special episode of the USAID Bulletin, we are celebrating Global Entrepreneurship Week. We will also be acknowledging and celebrating the dynamic Pakistani entrepreneurs and innovators who have received funding from the US government to establish and strengthen their new businesses. 1 week each November, as part of the Global Entrepreneurship Week, thousands of events and competitions are held in 180 countries, aiming to inspire millions to engage in entrepreneurial activity while connecting them to potential collaborators, mentors, and even investors. This year in Global Entrepreneurship Week, 4 distinct theme areas, that is, education, ecosystems, inclusion, and policy, are focused to spotlight impactful voices and organizations, as well as inspiring activities that are helping empower entrepreneurs everywhere. USAID has also celebrated this week in Pakistan by organizing events to celebrate the successes of Pakistani entrepreneurs that have been supported through the USAID Small and Medium Enterprises activity. Globally, small and medium enterprises contribute approximately 66% of full-time employment. In Pakistan, small and medium businesses form the backbone of the economy and make up nearly 98% of approximately 3.2 million businesses. Like many countries around the world, Pakistan faces economic and social development challenges that will require the energy and vitality of its youth and entrepreneurs to solve. USAID's Small and Medium Enterprise activities supports Pakistan in SME-led economic growth, which has created many jobs, fostered entrepreneurship, and contributed to an increased GDP. The project has been working mainly in 3 domains to support Pakistani entrepreneurs. Helping entrepreneurs to create a better business enabling environment, for which the project has worked closely with the Federal Ministry of Industries and Production and Small and Medium Enterprise Development Authority to revise Pakistan's national SME policy. The proposed policies will help create business-friendly regulations, promote ease of doing business, and cultivate a business environment that encourages private investments. Moreover, it has been instrumental for the provincial governments to augment their investment policies. USAID's SMEA project also provides business development services and training to entrepreneurs for building their capacity to compete better in domestic and international markets. The Business Development Services program includes support with local and international certifications, digital marketing, access to finance, website and software development, business planning and strategy, and ERP systems. Through its Challenge Fund program, the SMEA project supports entrepreneurship in 2 important areas. First, it works with individual entrepreneurs to help them grow their businesses and secure funding from private investors. Second, to partner with investors, intermediaries, and other donors to make sure that entrepreneurs have access to the services that they need to be successful. USAID awarded hundreds of grants through its Small and Medium Enterprise activity, which has been helping enterprises enhance their competitiveness, create jobs, increase sales and exports, open access to new markets, and adopt new technologies. One of the most encouraging efforts of SMEA has been the work with women entrepreneurs from a variety of sectors. These female entrepreneurs are being supported in terms of analyzing their businesses, planning for growth, ensuring compliance on taxation requirements, and utilizing new tools such as digital marketing. Our reporter has put together a special report for you. Let's take a look. पाकिस्तान में दस्तकारी यानी हैंड क्राफ्टिंग का काम एक मुनफरिद पहचान रखता है। हाउस ऑफ लतीफ़ चलाने वाली मदीहा लतीफ़ का ये अज़्म है कि पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स को दुनिया भर में मनवाया जाए और पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को पूरी दुनिया में एक पहचान मिले। इस सिलसिले में USAID स्मिया चैलेंज फंड ने मदीहा की किस तरह मदद की, आइए जानते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो स्मॉल स्केल होते हैं ऑब्वियसली, तो फाइनेंसेस जो होता है वो सबसे बड़ा एक कंस्ट्रेंट होता है। सो हम एक पॉइंट तक तो ज़रूर पहुंच चुके थे, बट जो माइलस्टोन्स और एक जो लेवल हम अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रेवेन्यूज़ से जो है वो उतने हमें एनहांसमेंट्स नहीं मिल रही थी। इसी दौरान हमने USAID को अप्रोच किया। व्हेन दे एग्रीड टू फंड आवर प्रोजेक्ट्स, दिस हेल्प्ड अस, स्पेशली कोरोना के वक्त ये इम्प्लीमेंटेशंस हो रही थी, तो लिटरली कोरोना को राइड करने में हमें बहुत मदद की है इस फंडिंग ने। हमारा कॉन्सेप्ट एक रीजनल बिजनेस का है। USAID ने इस चीज़ को समझा और उसकी इंपॉर्टेंस उसको रिकग्नाइज़ किया और हमें जितनी भी असिस्टेंस चाहिए थी वो सब उनने प्रोवाइड की।
تو جو ہم نے 1 سال میں کرنا تھا وہ ہم نے 6 مہینے میں کر دیا. اب اس کی وجہ سے جو ہمارا جو 3 سال کا پلان ہے وہ زیادہ ایکسلریٹ ہو گیا ہوا ہے. تو جو ہمارے مائل سٹونز ہیں ہم وہ پہلے ہی اچیو کر لیں گے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ×5 ہے, ×10 ہے. اسی کے تھرو ہم اپنے سیٹلائٹ آفیسز کھولنے کا بھی سوچ رہے ہیں. اس میں اوبویسلی جو ہے وہ امپلائمنٹ زیادہ کریٹ ہوئے گی, اور جو ہمارا ویژن ہے کہ پاکستان کی کمپنیز کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جائے, اس کی کرافٹ کو ریکگنائز کیا جائے, وہ بھی اچیو ہو جائے گا. ہم اپنا بزنس ہمیشہ ایک گلوبل بزنس بنانا چاہتے تھے, اور اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بیچنا چاہتے تھے. اور USAID نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ انٹرپرینرز جو ہیں ان کو اسسٹ کیا جائے اور ان کو سپورٹ دی جائے, اور انفیکٹ ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے بہت زیادہ اضافہ کیا. دس از کریٹیکل کہ جو ینگ انٹرپرینرز ہیں ان کو USAID جیسے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسسٹ کر رہے ہیں, اینڈ دے شوڈ بی ریکگنائزڈ اینڈ اپریشیٹڈ. Now let's take a look at this week's special report. میں ہوں شازیہ نیار اور میں اس وقت موجود ہوں پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں. یہاں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان سنگل ونڈو آپریشن کس طرح سے صنعت و تجارت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے یہاں موجود شرکاء سے. تو آئیے میرے ساتھ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف ڈومین آفیسر نوید عباس میمن. ہم ان سے جانیں گے کہ اس پروجیکٹ سے پاکستانی تجارت کو کس حد تک فائدہ ہوگا, اور جو تاجر حضرات ہیں انہیں کون کون سی فیسلٹیز مہیا ہوں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, پاکستان سنگل ونڈو کی امپلیمنٹیشن کے بعد جو ایسٹیمیٹس ہیں کہ پاکستان کو اینولی $450 ملین کی کاسٹ کی ریڈکشن ہوگی جو بھی بزنسز ہیں ان کو, اور جو ابھی اس ٹائم پہ مختلف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے لیے ڈفرینٹ لوگوں کو, ٹریڈرز کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے بعد جانا پڑتا ہے, وہ اس پروجیکٹ کی لانچ کے بعد لوگوں ٹریڈرز کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس جانا نہیں پڑے گا. ان کو اپنے آفیسز میں بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپس پہ, اپنے کمپیوٹرز پہ ان کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس پوری ہو جایا کریں گی, اور ڈفرینٹ پیمنٹس کے لیے جو ان کو ڈفرینٹ بینکس میں جانا پڑتا ہے فزیکلی, وہ ایک الیکٹرانک پیمنٹ کے تھرو وہ اپنے ایک آفس میں بیٹھ کے کر سکیں گے. اس وقت میں موجود ہوں سنگل ونڈو کمپنی کے CEO آفتاب حیدر صاحب کے ساتھ, اور ان سے ہم جانیں گے یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کیا سوچا انہوں نے اس ون ونڈو آپریشن کے لیے کہ کس طرح سے ہم تاجروں کی مدد کر سکتے ہیں. یہ آئیڈیا کیا تھا, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ. جی, پاکستان سنگل ونڈو کا جو انیشیٹو ہے یہ بیسکلی پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے انڈر دی WTO, اور وی آر سپوز ٹو رول دس پروجیکٹ آؤٹ بائی جون 22. الحمدللہ اس وقت ہم 21 کے اینڈ پہ ہیں, اینڈ وی ہیو آلریڈی رول آؤٹ دی فرسٹ فیز. دی آئیڈیا بیسکلی از ٹو کریٹ اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جہاں پہ کسٹمز اور باقی سارے جو ٹریڈ سے کنیکٹڈ ادارے ہیں وہ اکٹھے آ جائیں, اور ٹریڈرز کو پیپر لیس ایک فیسلٹی مل جائے, ان کو دفتروں میں وزٹ نہ کرنا پڑے, ملٹیپل ٹائمز ڈاکومنٹیشن جمع نہ کرنا پڑے, انفارمیشن جمع نہ کرنا پڑے, پیمنٹ ساری الیکٹرانک ہیں. سو وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از پرووائڈ دی ٹریڈرز اے فیسلٹی ٹو کنڈکٹ دا انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانزیکشنز فرام دی کمفرٹ آف دیئر ہوم اور آفسز, جسٹ یوزنگ a simple tablet or a laptop or even their cell phones. That's the basic idea behind that. We are going to connect about 74 different entities into it. Or once the single window is rolled out, the cross border international trade جو پاکستان کی ہے وہ ٹوٹلی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ شفٹ ہو جائے گی. کنٹینرز بار بار پورٹ کے اوپر کھلیں گے نہیں, مختلف ایجنسیز چیک نہیں کریں گی, اینڈ ٹریڈرز کا کاسٹ اینڈ ٹائم دونوں ہی بچے گا. سو اٹس اے ٹرولی ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹ, اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو دی USAID فار پرووائڈنگ دی ٹیکنیکل اسسٹنس. Over a very prolonged period since 2015 they have been supporting this initiative, and they still are the biggest benefactors for the project in terms of technical assistance and other support that we need from them. So a big thank you to them. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وقاص شاہ صاحب جن کا تعلق پاکستان سنگل ونڈو سے. ہم ان سے جانیں گے کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں. Basically, this organization has been formed under the National Single Window Framework of World Trade Organization, and Pakistan Single Window is actually the implementing agency
of the single window concept, which is actually helping out to support international trade in Pakistan. The mandate of the organization involves ease of doing business in Pakistan, trade automation processes, and overall creating a network of organizations, different government organizations, and bringing them within the portal of Pakistan Single Window so that it can create an ease for every trader in Pakistan. मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुसन बानो के साथ, जो कि चीफ़ ऑफ पार्टी हैं USAID की तरफ से। उनसे हम जानेंगे कि मज़ीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हुसन बानो। वालेकुम सलाम जी। अच्छा हुसन बानो, आप बताएंगी कि ये क्या किया जा रहा है और ये किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है? तो आज सॉफ्ट लॉन्च है पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है जो पाकिस्तान कस्टम्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट से लॉन्च हुआ है, और ये 78 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इस तरह लिंक करता है कि अगर बिज़नेस ने जो ट्रेड कर रही होती है उसने सिर्फ एक बार एंट्री डालनी होती है डेटा की पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी में, एंड उनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या ट्रांसिट का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कई जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन ट्रेडर्स को और बिज़नेस को करनी पड़ती थी ओवर नंबर ऑफ़ डेज़, यानी कि वो एक डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेते थे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट से लेते थे, कभी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पैसे जमा करते थे, वो अब नहीं करने पड़ेंगे। अब पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन होगी, इंफॉर्मेशन एक बार सबमिट होगी जो सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स में चली जाएगी, और ये इस पोर्टल के थ्रू, इस पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी के थ्रू आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी अश्योर कर सकेंगी कि कंप्लायंस रेगुलेशंस के साथ हो रही हैं। सो ये दोनों का फ़ायदा यहाँ हो रहा है। पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक्टिविटी जो USAID फंडेड है, हमने फ्रॉम द स्टार्ट जब इसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान कस्टम्स ने एक्सेप्ट किया था कि हम नेशनल सिंगल विंडो बनाएंगे, हम उस वक्त से लेके अब तक इस पाकिस्तान सिंगल विंडो की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। हम टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और मुख्तलिफ लेवल्स की प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जो हमारी असिस्टेंस फॉर एग्ज़ाम्पल रेंज करती है कि हमने पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 की ड्राफ्टिंग में उनकी पाकिस्तान कस्टम्स की हेल्प की, हमने 48 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बिज़नेस प्रोसेसेस एनालाइज़ किए और उनको री इंजीनियर करवाया। हमने पाकिस्तान सिंगल विंडो का इम्प्लीमेंटेशन प्लान, सिंगापुर की एक मशहूर कंपनी है क्रिम्सन लॉजिक जिसने सिंगापुरियन सिंगल विंडो कंपनी बनाई थी, उनसे बनवाया। अभी भी हम जो सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर डिज़ाइन है उस पे हम मदद दे रहे हैं कस्टम्स की, और आइंदा भी देते जाएंगे। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल सी पोर्ट्स को कनेक्ट करवा रहे हैं सिंगल विंडो से, इस तरह आपकी लॉजिस्टिक सेक्टर भी इसमें बेनिफिट करेगा। लेकिन अब हम एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करवाने जा रहे हैं सिंगल विंडो से, ताकि आपकी जो कंसाइनमेंट जहाज़ से आती हैं वो भी आपकी उसी आसानी से क्लियरेंस हो जाए जिस तरह बाकी कंसाइनमेंट्स होती हैं। Now let's take a look at some of the highlights from USAID Live with Shela Rizwan and Tawseek Haider and see what guests they have for us. जब भी मेरे साथ कोई फीमेल कॉलीग होती हैं तो मेरी एनर्जी लेवल इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आई लव कलर्स। शैला भी इस सेशन से पहले मुझे बता रही थी कि भाई कोई एनर्जी लेवल है अफशीन का, कोई वाइब्रेंस है, और तुम बड़ा एंजॉय करने वाले हो। तो आई एम आल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू। थैंक यू तौसीफ एंड थैंक यू शैला, आपने इतना ज़्यादा मेरा रिच किस्म का तारुफ करवाया। आई होप आई कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। मुझे नई काम करने में, नई चीज़ें करने में, नए एक्सपेरिमेंट्स करने में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मज़ा आता है। जब मैंने USA ज्वाइन किया था तो मेरी बड़ी एक क्लियर सी थिंकिंग थी कि मैं एक प्रोजेक्ट जिसको मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं जब उसके बारे में बात करती हूँ ना, लोग कहते हैं कि बहुत पैशनेटली बात करती हूँ। Thank you so much. As always, thank you so much for watching our bulletin. We look forward to your suggestions and your comments, and we'll see all of you again next week.